or emit electromagnetic radiations, sir. Because of that, they take the radiation, and for becoming stable, they release electrons and give spectrum. They release electrons. अच्छा, photoelectric, माने photoelectric effect and hydrogen spectrum got married with each other, right? Is that it? आज सुबह इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बोले सभी में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो. Sorry, sir. Chalo, let's start. So what we plan to do today is essentially we are going to do two simultaneously topics together, mixed with each other, not what is written in this particular book. So we are going to mix this one along with the Bose model together. Bose model we are going to talk in details tomorrow, right? But Shamsita, there's no problem in English, right? No. Okay. So what we plan. So Bose model is given in the second part of our discussion. That is something which we are going to do tomorrow. But anyway, today's discussion will be intertwined with Bose model. So tomorrow, already we knew many things, and we are just going to add bits and bits on there and solve problems. Right. So first of all, let's talk about the Rutherford model. Right. Let's talk about the Rutherford model. What did the Rutherford model actually talk about? Yes, sure. Shamsita? Shamsita, what did the Rutherford model talk about? Rutherford model. Yeah. Drisha? Yeah, you want to say something? Yeah, please. Drisha, do you know about Rutherford model? Yes, sir. What does it say? It says that atoms are not equally distributed, sir. When alpha particles are collide with the atom, they deflect in other direction, or passes. Just a moment. Atoms are not equally distributed. Is that a correct statement, Victor? Okay. I'm not talking about the Rutherford experiment. Between that. I'm not talking about the Rutherford experiment. I'm talking about the Rutherford's atomic model, which essentially says that you have got a nucleus at the center and the electrons are rotating in circular paths, right? In concentric circular paths, right? So he basically talked, and majority of the space of the atom is free, with the nucleus, that is the positive center, at the middle of that. Remember, Musaddi, I taught you maybe 3 or 4 days back. Yes, sir. So that was the Rutherford model. What does it say? Is that you have got a nucleus in the middle. The electrons are orbiting around that nucleus, right? And majority of the volume of the atom is free. It means empty space. That's what they said. But there was one particular problem as far as Rutherford's model was concerned. It says that whenever a charged particle is rotating or accelerating or moving in across another charged particle, that means this is the electron, this is the nucleus which has got proton. So one charged particle is moving around another charged particle, then this particular charged particle is going to radiate energy. Shamsita, remember this? Now, as soon as it basically releases energy, the energy of this electron is going to decrease. So slowly, the path in which it basically rotates becomes smaller and smaller. And as soon as the energy decreases and becomes zero, it will collapse into the nucleus. So the failure of Rutherford model was essentially that it could not explain the stability of an atom. Everything you see around you are stable, but it could not explain the stability of the atom. That was the main problem with Rutherford, right, of an atom.
So then came Bohr. He was trying to solve this particular problems. And what he suggested was this, that here you have got a nucleus. The electrons are now moving once again in circular orbits, concentric circular orbits. But in contrast to Rutherford model, what Bohr suggested is this: as the electrons are moving in this particular concentric circles, they are not releasing energy. They are not releasing energy. And if they are not releasing energy, then the stability of the atom will be there. Yes, Drisha, is that clear? Yes, sir. Shangstita, is that clear? Yes. Yeah, the reason I am telling you this, what's happening? Rutherford kya bol rahe the? Rutherford was saying that as the electrons was rotating, it was losing energy. And therefore, it is ultimately falling into the nucleus and there's a total collapse of the atom. That was the problem with the Rutherford model. Now, Bohr was an intelligent person. Electron only resolves in a fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity. Yeah, that is what is written in the book. We are going to explain that tomorrow. But right now, I am trying to explain the hydrogen spectrum and bringing in some concepts of the Bohr's model so that this hydrogen spectrum becomes easier for you to understand. So Bohr exactly said that it is going to rotate in circular orbits, right? Of course, with fixed energy and of course with fixed angular momentum. That's what we are going to talk tomorrow, right? It's of course rotating in this circular motion orbits, right? For circular paths. And while rotating in this circular paths, they are not releasing energy. That means electrons are not losing energy. If the electrons are not losing energy, it would naturally mean that the atom will be stable. So what is the idea that we are taking? The idea that we are taking is this, that here is the nucleus, right? Then I have got a nearest orbit out here. Electrons are going to move in this particular orbit. In between these two orbits, after this orbit, there's another orbit. Out here also the electrons are rotating. This orbit has got a fixed amount of energy. This orbit can have a fixed amount of energy. But between these two energies, there can be no other orbits. Between these two orbits, there can be no other orbits. Right? Then you have got another particular orbit, say about the third orbit. Once again, it is rotating. The electrons are rotating in the third orbit. Now out here, this particular orbit also has got a certain energy, right? And while rotating in this particular orbit, the electrons are once again not losing any energy. What is the condition that when an electron is not going to lose energy? That's something we are going to discuss tomorrow. Just I'm giving you the summary for you so that you can understand tomorrow's lecture better, or today's lecture also better. So you have got one energy. When the electrons are roaming in this, moving or rotating in this path, there's no loss of energy. When the electrons are rotating in this particular second path, there's no loss of energy. When the electrons are rotating in this particular circular orbit, there's no loss of energy. However, the energy of this orbit is fixed. Energy of this orbit is fixed. The energy of this orbit is fixed. Right. All these three orbits have got fixed energy. In between, there can be no other orbits because the condition where an electron can move without losing an energy is determined. And that inner orbit, say for example, if I draw an inner orbit out here, say for example, you might very well say, why can't the electron move in this pink orbit? It cannot do so because it violates the condition which Bohr said has to be followed so as the electron while rotating is not going to lose energy. Our main point for today's discussion is like this. The energy of this orbit is fixed. The energy of this orbit is fixed. The energy of this orbit is fixed, right? And as we go away from the nucleus, the energy also increases. That means energy of this particular orbit is the minimum. Then comes out here minimum. Then there is more than this. And out here, it is still higher. So as you go away from the nucleus,
the energy of the orbits increases. Clear? Huh? Shaustita, yes, I'm trying to listen to you. Clear. Sir, can you please repeat one last part? Yeah, I'm going to repeat it. কেউ বন্ধ করার কেউ নেই নাকি গো? Yeah. What it says is like this. Tell me what you have understood till now, Musadi, so that I can start from there. Sir, I understood that each orbit has a fixed energy and no other orbit can be drawn between them. It violates Yeah, very good. It violates Whatever principle that, whatever conditions he has led, so that the electron won't lose energy. Yes, sir. अगर वो बीच में जो पिंक वाला ऑर्बिट पे घूमता है तो इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू लूज एनर्जी एंड अल्टीमेटली द एटम्स इज गोइंग टू कोलैप्स. हाँ कि ना? Yes, sir. Yeah, then tell me then what you have understood. Yes, sir. और कहाँ पर दिक्कत है बता, मैं तो वही बोला. नहीं सर, और समझ गया. Now it's clear? Yes, sir. Fine. So now what are these things? Now this particular circular path essentially represents what? This particular circular path essentially represents an energy, certain amount of energy. Yes or no, both of you? Yes, sir. Yes or no? Shamsita? Yes, sir. This particular path once again represents some other energy which is higher than E1. Yes? Yes, sir. Yes, sir. This particular path once again represents another particular path where when the electron rotates is not going to lose its energy, but the energy of this particular path is higher than the previous two. Say suppose this is E1, this is E2, and this is E3, then E3 is greater than E2 is greater than E1. Is that clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now this represents, yeah. So this represents energy. Can I not therefore simply, instead of writing or drawing this cumbersome pictures, can I not simply represent this as this is the minimum energy an electron can have? Then this corresponds to E1. Then this energy corresponds to E2, another line, horizontal line. This third orbit corresponds to another energy level. I say E3. And likewise, I draw E4, E5, E6. Can I not write it in this way? Instead of writing this cumbersome picture, where energy is increasing in this particular direction. Yes or no? Not clear? So can you repeat? Yeah, I'm repeating. Okay. I'm explaining once again. Tell me, whoever can answer me, answer me. What does this particular circular path, the one I am, okay, let me put the bold color. What does this particular circular path actually says? The one I'm drawing in yellow. What does this circular path actually says? What do you mean by this circular path? What happens when an electron moves in this particular circular path? Tell me. What happens if the electrons rotate in this particular circular path? Tell me. Yes, Dishya? So the atom is stable. No. Yeah, the atom is stable, but what you are going to say is this: the electron is not losing any energy. Right? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Fine. Now you tell me this. Does this particular orbit has got a fixed amount of energy? Yes or no? Yes, sir. Does this orbit represents a state when the electrons move in this particular orbit will be having a fixed amount of energy called as E1, a constant amount of energy called as E1? Can I not say this? Shravsita, Yes, can I say this? Fine. Let me draw this particular energy as this.
I call this as E1. Can I not draw this? I am representing it. What is the representation? Representation in a white paper with a pen is nothing but for us to understand. So this particular circular path represents an energy corresponds to E1. Yes or no? Yes, sir. The second part, let me choose this particular path now. What happens when the electron moves in this particular path? You tell me. Sir, The electron, no once again, energy do not. used by the atom. Yes, and the electrons have got an energy corresponds to E2. Out here, the electrons have an energy corresponds to E1. Yes or no? Yes, sir. Now, if Yes. just because I'm asking, you don't have to say yes. You have to understand and then say yes. Samstha bujha gelo? So this particular, when the electron, suppose when I say that electrons is moving in an orbit with energy E1, suppose I say like this, does it not also mean that the electrons will also be having energy E1? Yes, sir. ऑर्बिट माने क्या होता है? पाथ. उस पाथ में अगर एनर्जी E1 होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो उस पाथ में घूमेंगे उसको भी एनर्जी E1 होगा. Yes, sir. So this particular level, this initial level, E1 corresponds to the electrons are having an energy E1. What does the second path actually tells you? This one. What does it say? Once again, the same thing. When the electrons are moving in this particular orbit, it is not losing energy. And the electrons have got an energy value of E2. And E2 is greater than E1. Can I not simply say, write this once again and let this be E2? Can I not represent this as E2? Where the energy is increasing in this particular fashion? Can I not write this? Yes or no? Yes. This is energy in this particular direction. The energy is increasing. I'm writing this as E. Energy is increasing on the top towards top. Can I not represent this cumbersome diagram into this way? Yes or no? Samstita? Not clear. Drisha? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Samstita? No, sir. How do you measure height? You tell me. You measure height, that here is a scale. You say a kid is 3 feet. You put it out here, right? Class 8 kid is 4 feet 5 inches. You write out 4 feet 5 inches. And I am 6 feet. You write down as 6 feet. AC करके आप बोलते हैं ना? This is how you represent as a scale. Yes or no, Sanskita? Yes, sir. To measure height. That means what you are measuring in the y-axis, the height. Similarly, in the y-axis, this is the y-axis. In the y-axis, what you are measuring? Energy. How energy is increasing. You now tell me, Shamstita, that what does this orbit actually represents? A certain energy, yes or no? Shamstita? Yes, sir. This energy, can I not write it in this way? Can I not represent it in this way? Yes, sir. Energy level to. I can represent it this way. Now let's move into the second orbit. Is the energy of the second orbit more or less than the first orbit? More. Sir, more. Therefore, it should be higher than E1. This was 3 feet. This was 4.5 feet. So 3 feet से ऊपर तो यहाँ पर तो 0 है. तो यहाँ पर मैं भी 0 कर लेता है. चलो, if you are getting confused, 0.
हाँ कि ना बताओ? Where shall I? What does this orbit actually means? What does this orbit actually means? Tell me now, Shamsita, you tell me. What does this orbit actually means? Tell me, Shamsita. In more energy than the second. More energy of what? More energy than the second orbit. Yeah, that's true. But more energy of what? Musadi, more energy of what? Electron. Sir, electrons. Yeah, Electron. absolutely. Absolutely. So where shall I put? Where shall I put the third energy level? Below Sir, E2 above or E2. above E2? So I'll write it out as E3. Is it clear, Shamstita, now? So similarly, I can write E4, E5, E6. I can similarly write E4, E5, E6. I can simply write it down. Yes or no? So I'm writing this as E5. Just a moment. I can write this as E5. I can write this as E6. I can write this as E7. Is that clear, Musadi? Absolutely clear. We can only Yes, move sir. after. Shamstita, is it absolutely clear? Only then we can move from here to the next one. So essentially, this orbit represents what? This orbit represents Energy level of energy of the electrons, the different energy levels of the electrons. Clear? Done? Yes, sir. Done? Fine. Fine. You have got them. Now things becomes much more easier. Now things becomes much more easier. So let me draw this curve once again. Let me once again draw this curve because I have finished my space. So this is E1. This is another energy level. This is another energy level. This is another energy level. बाद में देखेंगे जब जितना ऊपर में जाएंगे उतना क्लोज हो जाता है एनर्जी. ये होता है the next energy level. और पकड़ लो यहाँ पर ही लेता है और ये है this much. And my energy is increasing. And my energy is increasing in this particular order. So this is how the energy is increasing. Okay. So all this represents the energies of the electrons orbiting or rotating in a fixed certain orbit. Wonderful. Now, when does absorption actually takes place? Absorption means here, now you have got a sample out here. Suppose I have got a sample out here, right? And I am giving certain radiations in this sample, right? Of different wavelengths. So let me put it in, let me draw it differently. Fine. I have got a sample out here. I have got a sample out here. And I am sending different wavelengths into it. Right? Say for example, out here I am sending the blue light. Blue light means its wavelength is the smallest, VIB GYOR. So GYOR. So blue has got a shorter wavelength than red. Suppose I am sending the blue. Then I am also sending the green, which has got a bigger wavelength. Then I am going to send the yellow, which has got still a bigger wavelength. Then I'm going to send the orange. Then I'm going to send the orange, which still has got a bigger wavelength. And of course, I'm going to send the red one, which still has a bigger wavelength. Right. So I'm sending all sorts of wavelength to this sample. All sorts of wavelength to this sample. Clear? So I'm sending 5 different lights. What do you mean by 5 different lights? By 5 different lights, we mean 5 different lambdas. Remember how do you characterize a wave? Do you remember? By lambda, nu bar, velocity. Velocity, remember?
Transita, you remember this is how we characterize a wave? Yes, Right. sir. So these are the different, so these are the different ways I can characterize a wave. So what I'm sending is this, I'm sending different wavelengths simultaneously through this particular sample. I've got a sample out here, right? And what does a sample have? Sample have got atoms into it, right? Now, suppose I have got an electron at this particular level. I had an electron in this particular level. Now, I'm sending this particular light, which have got an energy E is equal to h nu, which is equal to hc by lambda. So this particular light corresponds to a certain amount of energy. Yes or no? Yes, sir. Musadi is, yes, fine. We are almost done for today's discussion. The basics are also almost done. So this particular lambda corresponds to certain amount of energy. Now, suppose this particular is E1, this is E2, and we know that E2 is greater than E1. Now, suppose this lambda corresponds to a certain amount of energy, which is equal to delta E is equal to E2 minus E1. Suppose this energy, right, this energy, whatever this energy is given by the lambda, right, is equal to the difference of energy between E2 and E1. That means this difference energy is delta E is equal to E2 minus E1. Yes or no? This energy difference? Yes, sir. Now suppose this E corresponds to this E. That means what I'm doing is this, I am sending, once again, just because we are talking about red, we are sending a wave of this amount of energy, which corresponds to this energy. What is going to happen to the electron, you tell me? What is going to happen to the electron? I am feeding the electron. I am feeding this electron Energy. with an energy via I am feeding this electron energy via this wavelength, and the amount of energy that I am feeding exactly matches with delta E. What is going to happen, you tell me? It's going to jump. The electron is going to absorb that energy and is going to jump. Yes. Because it has to, it is going to jump. It is going to jump from here to here. This electron can go only up to here, or this electron can go up to here. This electron can go up to here, but it cannot go any place in between. यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, इस level में नहीं जा पाएंगे because we don't have those orbits. Yes, sir. Fine. We are done almost. Fine. So this particular wave. So once this particular electron absorbs this energy, then while the things are coming out, while this particular wavelengths are coming out, this red one is getting absorbed. That means what I'm going to have? I'm going to have the blue color out because nobody is absorbing the blue color. I'm going to have the green color out because nobody is absorbing the green color. I'm going to have the yellow color out because nobody is absorbing the yellow color. I'll be having the orange color out because nobody is absorbing the orange color. But since this red color is getting absorbed, there'll be no red wavelength corresponding to the red color coming out. Akina bata. Yes, sir. Clear? Absolutely clear? Yes, sir. That means what? That means what? Now look at the fun. That means what? You are basically analyzing the waves that is coming out after absorption. Once the electron eats this particular wavelength, you are going to say that it has absorbed. Yes or no? This wavelength has been absorbed. And where you are studying which wavelength has been absorbed?
you are studying it from this, from when the radiations are coming out from the system. Here you suddenly see this red color is missing. This red color is missing. यहाँ पर तो red color है नहीं मेरा पास out, है ना? No red color is coming out. That means what you are studying after the system absorbs a certain wavelength. This kind of spectroscopy is called as absorption spectrum. Why absorption? Because light is getting absorbed. Why spectrum? Because you are analyzing light. Light में 7 color होते हैं. इसमें कौन उन्होंने absorb किया, कौन उन्होंने absorb नहीं किया. We are studying the spectrum. कौन सा spectrum study कर रहे हैं? After it has been absorbed by the system. That's why we call this as absorption spectrum. देखिए. Yes or no? Yes, sir. Absolutely clear? Yes, sir. Yes, sir. Suppose instead of now, let me wrap this. There's no way of I can copy this. Let me wrap this. Suppose, let me ask you this. Let me ask you this. Suppose an electron has to jump from E1 to say E3, E4, E5 and E6. Suppose the electron has to jump from E1 to E6. It is jumping from E1 to E6. Right? Yes, sir. Which of this particular waves it is likely going to absorb? Sir, I've given you 5 colors. Tell me why. Sir, because it has the shortest wavelength. So, Sir, shorter the wavelength, higher is the energy. absolutely wonderful. Disha, you are very, very good. Absolutely. The difference between this energy and this energy is the maximum. Yes, sir. Shangstita? The difference between this energy E1 and E6 is the maximum. Therefore, in order for the electron to move from this level to this level will be the highest. Shangstita, yes or no? Now, I require the maximum amount of energy. Once again, I know what? I know E is equal to hc by lambda. In order for the energy to be absorbed, is the highest, or you need to give the maximum amount of energy. In order to give the electrons the maximum amount of energy, lambda has to be the smallest so that E becomes the maximum. রাস্তাটা বোঝা গেল? লজ্জা পাওয়ার কিচ্ছু নেই, দরকার আমি আবার বোঝাবো। বুঝেছি। Absolutely clear? That means if I am going to study this spectrum, say red, which color will be missing from the absorption spectrum? Blue. Wonderful. The blue is going to get missed. Why it is called absorption spectrum, Shangstita? কেন কি এটা কলর অ্যাবজর্ব করছে? No. Why it is called absorption spectrum? Can you be a little bit more specific? You are right, but that's not the exact answer I'm looking for. Why it is going to call it absorption spectrum?
Drisha? Sir, because it is absorbing the energy of the light, it is absorbing the energy of a color to get its energy to move to the orbit, next orbit. No. That's not the right answer. The right answer is a bit different. You are analyzing. When you are saying that absorption spectrum, what you are doing is this: you are analyzing the spectrum that is coming out of the system after absorption. Akina, absorption spectrum में तो दो word है. Absorption spectrum में I have got two words. What are those two words? One word is absorption. What is the second word? The second word is spectrum. So I have got two different words. I have got two different words. I have got two different words out here. So you have to explain, first of all, what is absorption and what is spectrum. ये तो explain करो. Absorption spectrum को मतलब क्या होता है? Spectrum को मतलब होता है, can you see? अच्छा दृश्य and Shamsita, both of you. ये white color में जो 7 colors है, आपको पता है? देख पाते हो? हाँ. देख पाते हो? sir. 7 color? No. No, you cannot see it. In order to find out the 7 colors, what you need to do? You need to send that light, white light through a prism. बचपन में पढ़े थे हम लोग. 7 color में वो distribute हो जाता है. That means you are analyzing the white light with the help of an instrument. And whatever that comes out from that prism, you say it is a spectrum. हाँ कि ना? Yes, sir. इसको spectrum को मतलब वही होता है. You have to analyze the light. You have to analyze the light once it comes out from the system. Only then you can say it is spectrum. Analysis कैसे करेंगे? वो sophisticated instrument है, IRI, UV, छोड़ो, वो बात अभी छोड़ो. ठीक है? तो it can be analyzed with the help of an instrument. किसको analysis कर रहे हो? Which one you are analyzing? You are essentially analyzing the spectrum that is coming out from the system after a possible absorption. Akina? Yes, sir. Yes. Yes, Shamsita, yes or no? Say for example, I have got a violet color also, right? I am, this is my sample. Okay, fine. Let me tell you this. Why I said that possible. Let me explain you this. Suppose I have got a sample out here. The same sample, I'm taking a different sample. And I am sending 2 colors. I'm just sending 2 colors. One is the violet color and the other one is the red color. The shortest and the longest. Now, if none of the energy levels out here, none of the difference in energy levels between here corresponds to either violet light or red light. इनको बीच में difference क्या है? E6 minus E5 को एक difference होगा क्या नहीं होगा बोलो? This corresponds to 1 delta E. E5 से E4 होगा. That corresponds to another delta E2. E4 say E3, it will correspond to another delta E3. So what I'm trying to say, when I basically take the difference of all possible combinations of the difference in energy levels, that means I can also take E6 minus E3. I can also take E6 minus E2. I can also take E6 minus E1. I can take the difference between E6 minus E4. I take all the combinations. एक का भी combinations को delta E do not match with either the violet light or the red light. तब क्या कुछ observe करेंगे? करेंगे क्या नहीं करेंगे बताओ?
नहीं sir. It can only absorb when the difference between them is a fixed value. So the difference between this and this, what is the difference between this and this? What is the difference between this and this? Ulta kar diya, sorry. What is the difference between this and this? It is, bolo, it is E3 minus E1. Yes sir. This is delta E. So if delta E doesn't match with either the violet light or the red light, will it absorb? बीच में तो कहां पर नहीं जा पाएंगे वो, बीच में तो कहां पर नहीं जा पाएंगे वो. संस्थित absorb করতে পারবেন না পারবেন না? পারবে না. পারবেন. Very good. It cannot absorb. That means if I analyze this, if none of the wavelengths matches with the energies of these two wavelengths, if I analyze this, then once again बाहर में मुझे क्या मिलेगा, कौन सा wavelength मिलेगा मुझे? तो दोनों ही मिलेगा. बराबर. Very good, very good. You people have understood. Very good, very good, excellent. So now you have understood why it is called an absorption spectrum, yes or no? Yes sir. संस्थिता बोलते हैं absorption spectrum काके बोले? যখন অ্যাবজর্ব করতে পারে. Why you are calling it absorption spectrum? নামটা মানেটা কি? দুটো ওয়ার্ড আছে, absorption spectrum. Drisha, can you explain me? Yes sir. Bolo. Sir, because we are studying a spectrum after its absorption. Yeah, simple. We are analyzing the light wavelengths that are coming out from the system after absorption. That's why we call absorption spectrum. Clear? Constita বুঝা গেল? ঠিক আছে, fine. Next. So you have understood what is an absorption spectrum. Acha Drishya, let me ask you this. Sometimes do you get angry? Yes sir. क्या करते हो उसके बाद? Sir चिल्लाता है. Why do you shout? Frustrated. Yeah. What happens after you're shouting? Nothing. What happens to you? What happens to you after shouting? You calm down? Shanti. Yes, sir. Shanti. You have understood what is emission spectroscopy. You have understood what is emission spectroscopy. खत्म कहानी. সংস্থা তুইও ট্রাই করিস নাকি? রেগে গেলে চিৎকার করিস, তারপর আবার চিৎকার কি করিস? কাঁদি. আচ্ছা, কাঁদার পরে কি হয়? তোর জীবনে কি হয়? শান্তি নেমে আসে না? সমস্ত দুঃখ জলে ভেসে যায়. तेरा दुख वो आंखों को पानी में डूब के मर गया. आंखें ना बोल. तेरा जो कष्ट, दिल में जो कष्ट था, वो अभी हो, तेरा आंखों से जो आंसू निकलता है उसमें डूब के मर गया. आंखें ना बता. Yes sir. तेरा शांति आ जाता है क्या? बता. बस. एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी तेरा कहानी का खत्म है. देख अभी क्या करता है. Can you tell me what is emission spectroscopy now? मेरा बच्चा हंस रहा है मेरा बात सुन के. बोल, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हो पाता है? बोल. Now you people tell me. मुझे जो एक्सप्लेन करना है कर दिया मैंने. बोल. बोल दृश्य बोल. अटेम्प्ट. गलत होगा तो गलत होगा, क्या है तेरा? शर्म को कुछ बात होता है क्या? गलत सब करते हैं. बता. सर मैंने वो जब ज्यादा एनर्जी होता है उसमें वो एलिमेंट को मतलब एमिट कर देता है. और एलिमेंट क्या होता है बेटा? एलिमेंट नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन. तू पहले से एलिमेंट सब्सटेंस बहुत कुछ बोल रहा है सुबह से. सॉरी सर. अच्छा देख, यहाँ पर मेरा एक ट्यूब है. ठीक है, क्या है? एक ट्यूब है. यहाँ पर मेरा एक ट्यूब है. इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं. ठीक है.
यहां पर मेरा हाइड्रोजन गैस है, यहां पर मैं बाहर से बहुत जोर से एनर्जी दे रहा था, एकदम ज्यादा बहुत एनर्जी देता है, हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज देता है। तो हाई वोल्टेज जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज देता है तो ये हाइड्रोजन गैस टूट के ये एटम बन जाता है, ठीक है, ये एक एक एटम बन जाता है, ये बॉन्ड टूट के एक एक हाइड्रोजन एटम बन गया। तो हाइड्रोजन एटम को मतलब क्या होता है रे बेटा? हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूक्लियस को बगल में कितना इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? एक। हाँ कि ना? यस सर। समझते? यस और नो? समझते? समझते? है सर, है यस सर। म्यूट को रखिए। बट दैट डजंट मीन उनको एक ही एनर्जी लेवल है, उनको और ऊपर में भी एनर्जी लेवल है, मे बी दे आर वैकेंट बट स्टिल देयर इज एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर और एक एनर्जी लेवल है क्या? नहीं पता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एनर्जी लेवल्स में भी वैकेंट बट एनर्जी लेवल्स तो है। तो जब हम लोग बाहर से एनर्जी दे रहा है, दैट मीन्स दिस इलेक्ट्रॉन एसेंशियली गेट्स एक्साइटेड करके यहां पर चला गया। हाँ कि ना बता? यस सर। इट हैज जंप्ड फ्रॉम हियर टू हियर। उसको मतलब क्या होता है? उसको मतलब होता है अभी मेरे पास कैसी एनर्जी लेवल होगा, अभी मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों खाली है कि ना बता? यस सर। नाउ तेरे गुस्सा होने से तू क्या करता है दृश्य? तू अभी बोला तू शोर मचाता है, शोर मचा के बाद तू क्या करता है? शांत हो जाता है। ऐसी कहानी है यहाँ पर। ये तो एक्साइटेड हो गया, अभी इसको एनर्जी रिलीज करना है, तो ये यहां से जंप करके यहां पर भी आ सकता है, जंप करके यहां पर भी आ सकता है। तो यहां पर ये दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल E3, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल E2, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल E1। तो जब E3 से E2 आएंगे, E3 से E2 आएंगे, तब इन्होंने डेल्टा E एनर्जी कम हो गया उनको, हाँ कि ना? यस सर। तो डेल्टा एनर्जी कम हो गया मींस ये एनर्जी बाहर आ जाएंगे सिस्टम से, हाँ कि ना? ऋषि हाँ कि ना? यस सर। अगर ये एनर्जी बाहर आ जाएंगे, कितना एनर्जी बाहर आया? डेल्टा ई। इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ क्या होता है बेटा? hc by lambda। तो ये एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू लैम्डा। तो मुझे क्या मिलेंगे? ये है मेरा एक्साइटेड सिस्टम। इसको अगर मैं शांत होने को टाइम देगा तो तेरे में भी वो बिहेव करता है, शोर मचा के एक एनर्जी निकाल देता है। तू शोर मचाता है मीन्स तेरा एनर्जी निकल रहा है बाहर का, ये भी एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी निकल गया। कौन सा एनर्जी निकल रहा है? दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन ये E3 से E2 आया ना E3 से E1। गॉट इट? यस सर। That means what you need for a emission spectra? For an emission spectra, you needed what? You needed an excited atom. Atina? Vishnu, yes or no? यस सर। Vishnu, तू अभी मत बता मुझे why it is called as emission spectra. Why it is called as emission spectra? बता. Any one of you. Sir, because it is emitting. यहाँ से this time you are not sending any wavelengths from this direction. Excited atom यहाँ पर भरे हुए हैं. Now it is going to emit light of different wavelengths. Yes, sir. Now you are analyzing the spectrum that is coming out. That is emitted by the sample. Emitted by the sample. उसलिए हम लोग बोलते हैं emission, और analysis कर रहा है बोलते हैं हम लोग बोलते हैं spectrum, emission spectrum. बुझा गया ना? समझता? এই জিনিসটা কালকে আবার ডিটেইল বোস মডেল ডিটেইল করব। নাও ডু ওয়ান থিং,
हम लोग को ज्यादा से ज्यादा कहानी खत्म हो गया। तू अभी हाँ ठीक ठीक। Now suppose now the another important part is there. Suppose you are putting a photographic plate out here. यहाँ पर मेरा सैंपल है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिफरेंट वेवलेंथ भेज रहा है और डिफरेंट वेवलेंथ भेज रहा है। तो कुछ वेवलेंथ उन्होंने एब्जॉर्ब की, कुछ वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब नहीं की, ठीक है। तो कुछ वेवलेंथ उन्होंने एब्जॉर्ब की, कुछ वेवलेंथ उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं की। एक फोटोग्राफिक प्लेट क्या डिटेक्ट कर सकता है बेटा? लाइट। यस सर। फोटोग्राफिक प्लेट माने इट कैन डिटेक्ट लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? अगर मेरे पास 7 कलर्स है, इफ यू हैव गॉट 7 कलर्स, it would naturally mean that I've got 7 wavelengths. Yes sir. Right? तो 7 कलर में अगर उन्होंने खाली 2 कलर ही एब्जॉर्ब की, these 2 colors have absorbed, ये 2 कलर यहां पर मिसिंग होगा। Yes sir. बाकी सब वेवलेंथ यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। Yes sir. That means this one will be fully light colored होगा। एक स्ट्रिप होगा जहां पर पूरा लाइट देखेंगे। Only those light wavelengths will be missing जो एब्जॉर्ब किया। That will come, those portions of the plate will come as black lines on a colored plate. Yes sir. ফাংশনটা বোঝা গেল? দেখ আবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখ আমি এখানে পিঙ্ক লাইট পাঠিয়েছি, আমি এখানে ব্রাউন লাইট পাঠিয়েছি, আমি এখানে ইয়েলো লাইট পাঠিয়েছি, আমি এখানে গ্রিন লাইট পাঠিয়েছি, আমি এখানে রেড লাইট পাঠিয়েছি, সমস্ত লাইট পাঠাচ্ছি। আর আমি পাঠাচ্ছি ব্লু লাইট, সমস্ত লাইট পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে। এই হচ্ছে আমার স্যাম্পল। স্যাম্পলটা আমার খালি ব্লু লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করলো আর গ্রিন লাইটটাকে অ্যাবজর্ব করলো। তার মানে আমি বাইরে কি কি পাবো? আমি বাইরে পাবো পিঙ্কটাও পাবো, আমি ব্রাউনটাও পাবো, আমি ইয়েলোটাও পাবো, আমি রেডটাও পাবো। পাবো কি পাবো না বল সংস্কৃতা? তাহলে if I put a photographic plate out here, shall I get the pink color in the photographic plate? Yes sir. Yes. Shall I get the brown color? So यहाँ से, अच्छा let me put it in this way. यहाँ से suppose this is pink. Pink color मिल गया। Brown color, yes मिलेगा। Suppose this is brown color. उसके बाद जो blue color था वो blue color missing है, हाँ कि ना? Yes sir. ब्लू कलर अगर मिसिंग होगा तो वहां पर मेरा डार्क कलर आएगा, डार्क ब्लैक आएगा। उसका लाइट है नहीं तो कैसे डिटेक्ट करेंगे? समझ में आ गया? Yes sir. If there is no light, it will be dark. उसके बाद मुझे कौन सा कलर मिलेगा? उसके बाद येलो, फिर येलो मिलेंगे, फिर ग्रीन मिलेंगे। The dark. ग्रीन मिलेगा ना? हाँ ग्रीन तो निकल गया। हाँ ठीक, वंडरफुल। ग्रीन तो एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे? डार्क मिलेंगे। वंडरफुल, ग्रीन तो एब्जॉर्ब कर लिया। डार्क मिलेगा, उसके बाद फिर रेड मिलेंगे। That means these colors are missing. So what I'm getting is a green color has got a fixed wavelength. That means what I'm going to get is either magnified क्या? I'll get a single line of wavelength that is missing. Black. हाँ कि ना? Yes sir. मेरा तो green color का तो एक ही wavelength होता है. That is missing. That means I'm going to get a line. मुझे blue color missing होता तो I'll get another line out here. That means in a colored photographic plate, those colors will be coming black, those areas will be black where the wavelength has been absorbed. That's why you call this as line spectrum.
एक स्पेक्ट्रम में you are getting all the colors except those wavelengths which are getting absorbed, and they are basically reflected as dark lines. We call them as line spectrum. This is what? This is for absorption spectroscopy. Absorption spectrum. Emission में हम लोग को photographic plate कैसे मिलेंगे बता? How we will get the picture in emission spectroscopy? बता. एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुझे फोटोग्राफिक प्लेट में कौन सा रिफ्लेक्शन मिलेगा? हाउ विल द फोटोग्राफिक प्लेट लुक लाइक? Sir, all the colors will be there, sir, which is emitted by the sample. The बाकी ऑल तो कलर्स एमिट नहीं करेंगे बेटा. यहाँ पर तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स तो फिक्स्ड है. Yes, sir. ओनली कौन सा निकालेंगे? देख, if the electron moves from here to here, if the electron moves from here to emit कर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तब एक कलर निकलेंगे. जब यहाँ से यहाँ आएंगे 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 एक कलर निकलेंगे. जब यहाँ से यहाँ आए और एक कलर निकलेंगे. तो हम लोग को सभी कलर्स तो नहीं निकलेंगे. हम लोग को कितना कलर निकल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यही तो मिलेगा हम लोग का. Yes, sir. है ना? So what I'm going to get? I am going to essentially get in the photographic plate. मुझे कौन सा मिलेगा एमिशन में? एमिशन में मुझे मिलेगा एक ही कलर मिलेगा सर. नॉट एक कहाँ पर है? यहाँ पर तो 10 कलर मिले तक. मतलब सर 10 में से कोई एक मिलेगा ना सर? अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो. हाँ, एक इलेक्ट्रॉन होने से. हाइड्रोजन के लिए बोल रहा था मैं. हाँ, हाइड्रोजन के लिए एक ही मिलेगा. हाँ सर. लेकिन अगर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा तो मुझे 10 12 15 20 कलर मिलेगा. यस सर. बट वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड. हाइड्रोजन के लिए क्या है? देख एक बार, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? एक तो हम लोग का कैसी मिलेगा, एक बार ड्रॉ करके देते हैं. ये है मेरा सैंपल. ये है मेरा सैंपल. एक्साइटेड सैंपल, मैं लिख दे रहा एक्साइटेड सैंपल. ये पर वेवलेंथ निकल रहा है 3. यहां पर मेरा फोटोग्राफिक प्लेट है. तो यहां पर तो लाइट खाली 3 ही वेवलेंथ का है. हाँ कि ना? यस सर. दैट मीन्स व्हाट? मेरा ये सब पूरा अंधेरा रहेंगे. ये सब पूरा अंधेरा रहेंगे. खाली इसमें जो कलर निकलेंगे, सपोज दिस इज रेड लाइट, तो यहां पर एक रेड मिलेगा. फिर मुझे क्या मिलेगा? फिर मुझे अंधेरा, लाइट तो है नहीं, डार्क. फिर यहां पर और एक कलर मिलेंगे, सपोज इट इज ग्रीन. जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट मेंटेनिंग द सीक्वेंस. उसके बाद क्या होगा? फिर अंधेरा, फिर मेरा अंधेरा आएगा. फिर यहां पर सपोज दिस इज ब्लू. That means it is essentially dark with certain colors. Akida? Yes sir. Absolutely clear? Yes sir. Yes, sir. Now I am going to tell you something. I guess आप लोग के पास you are sitting down with your NCERT book this year? Yes sir. Shanstita, are you sitting down with the NCERT book? Read from the evidence for quantized electronic energy levels till line spectrum of hydrogen. देखो एकदम, including the figure 2.10, including figure 2.10. देखो whether it is absolutely clear to you or not. पहले तो बोला था कुछ समझ में नहीं आया, अभी देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या. देखो पूरा पढ़ के देखो. I'll give you 4 minutes of time. Right now the time is 8:04. I'll give you time till 8:08. 4 मिनट टाइम देना, पढ़ के देखो.
from its original path as it passes from one medium to another is observed that when a ray of light is passed through a prism, the wave, the shorter wave intends more than the one of the longer wave. Since ordinary white light consists of what the rays in the visible range of ray of white light spread out into the CD of the color band of light of the red color, which is longest frequency, while the violet color, which has shortest frequency, is depleted in the spectrum of the light such a spectrum is continuous spectrum. Continuous because violet matches into two similar spectrums produced by similar spectrum produced when a rainbow forms in the sky. Remember, the visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation. When electromagnetic radiation interacts with matter, atoms and moons may absorb energy and bridge to the higher energy. Higher energy result in an unstable state for returning to their normal. The atoms and molecules of the radiation the spectrum of radiation emitted by the substance that has absorbed energy is called an emission spectrum. Atoms, molecules, or ions that have absorbed emission are said to be excited. To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample and indicating and wavelength of the sample is absorbed energy is recorded. And absorption spectrum is like photography of an emission. A continuous of radiation is passed through a sample which absorbs radiation and wavelength of the missing correspond to the dark spaces in the bright continuous spectrum. The study of the emission or absorption spectrum is referred to as spectroscopy. Mummy, Hello, clear? Yes, sir. Absolutely clear now? Sir, not understood the Balmer series. वो तो बाद में अभी आएगा. Okay, sir. बाकी सब पूरा clear? Yes, sir. You have now understood what is emission spectra, what is absorption spectra? Yes, sir. Have you seen the figure 2.10? Yes, sir. সংশ্লিষ্ট 2.10 টা দেখেছিস? Did you understand that as far as the emission spectrum is concerned, it is essentially black, उसके ऊपर white line देखो. Yes, sir. Figure 2.10A में देखो एकदम right hand side में एक Yes, sir. photographic strip देखा आपने? संस्कृत देखेছিস? Yes, sir. क्या देखा? ब्लैक में कुछ जगह में हमको लाइट दिखा रहा है, एक व्हाइट लाइन दिखा रहा है. Yes, sir. वो व्हाइट लाइट क्या हो रहा है? एमिट कर रहा है. बाकी कुछ एमिट नहीं कर रहा है बोल के पूरा ब्लैक है. क्लियर? Yes, sir. लुक एट फिगर 2.10B. क्या देख रहा है बताओ? सर वो कंटिन्यूअसली मतलब कर रहा है लेकिन एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए ब्लैक लाइन दिखा रहा है बीच में.
खत्म, कहानी खत्म। यही तो कहानी है एब्जॉर्प्शन एमिशन। ठीक है संस्कृत, ये सर नो एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ ये हाँ Fine, 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 fine. Now once again let me draw a few more lines. और एक बार मुझे वो कर्व करना पड़ेगा। कौन सा? चलो हम लोग कितना करेंगे? हम लोग करेंगे n इक्वल टू 630 करेंगे। चलो n इक्वल टू 630 करेंगे। सुमति सर अब बोल। ठीक है डन। दिस इज n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5 और n is equal to 6। ये n वाला चक्कर क्या है? n वाला चक्कर है आप लोग जो क्लास 10 में पढ़े थे 2n स्क्वायर, वो n यहाँ है n is equal to 1। वो समय वो बाद में आएंगे, कल आएंगे, छोड़। ये अभी टू एक्सप्लेन यू, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको हम लोग बोलता है n is equal to 1। जो सेकेंड ऑर्बिट है इसको हम लोग बोलेंगे n is equal to 2। जो थर्ड ऑर्बिट है n is equal to 3 बोलेंगे एंड लाइकवाइज। ठीक है डन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Fine, 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 fine. You have to continuously interact with me, otherwise I cannot see you in my front of me ना। सब तो कैमरा बंद करके डाटा बचाने को ले बैठे हैं। Well, until I see your faces, I don't hear your voices. How am I supposed to know that you people are understanding? Take it, chalo. Now, what are the transitions that is possible? Take it. I can make a transition. I am studying what? I am studying emission spectroscopy. I am studying emission spectroscopy. Emission spectroscopy का मतलब क्या है? The electron is in the excited state। पकड़ लो मेरा, जब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है, जो मैंने वो डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी, मैं तो थोड़ी एक एटम ली थी, मैं तो बहुत सारा एटम ली थी। हाँ कि ना? Yes, sir. ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था कहां पर? ये यहां पर जो डिस्चार्ज ट्यूब था मेरा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में मैं थोड़ी एक हाइड्रोजन गैस ली थी, एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ली। हम लोग तो हजारों करोड़ों में हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स ली। अगर एक मोल भी लेते हैं, एक मोल भी लेते हैं, तो दैट इज अराउंड 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन एटम्स बोलो तो ये 2 into इतना नंबर एटम्स हो जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ एक मोल तो 6.023 into 10 to the power 23 होता है। अगर 2 मोल लेता है उसको 2 गुना हो जाएंगे एटम्स। एटम्स उतना 2 गुना हो जाएंगे। Yes, तो sir. हम लोग जो बोलना चाहते हैं, हम लोग बहुत सारा एटम ली। कितने एटम ली? अगर मैं दृश्य और संस्कृत को एक टीम बनाया और बोला ये 6.023 into 10 to the power 23 को आप लोग काउंट करो एक एक कर, दोनों मिलके। तो संस्कृत एक काउंट कर रहे, दृश्य एक काउंट कर, दो हो गया। संस्कृत 3, दृश्य 4 हो गया। ऐसे करके अगर हम लोग काउंट कट के चलते हो तो 10 to the power 23 काउंट करने को लिए आपको ये जिंदगी जाएगा, नेक्स्ट जिंदगी भी जाएंगे, नेक्स्ट को नेक्स्ट जिंदगी भी जाएगा, ऐसी हजारों जिंदगी आपको चला जाएंगे, फिर भी आप लोग काउंट ही करते रहो। इतना सारा ज्यादा एटम्स है। समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता? सो देयर आर टू मेनी एटम्स इन द ट्यूब, जहां पर हम लोग एक्साइट कर रहे हैं। टू मिनट दीदी আমি পড়াচ্ছি, একটু পরে ফোন করছি। কেন বাবা জানো সেটা?
যাচ্ছি। তুই সব বলতে যাস কেন? যাইস না, পারিস না? না না, তো বাবাকে বলো দরকারটা কি ছিল। আস্তে আস্তে, হ্যাঁ পরে বলতিস, আমরা কেউ থাকলে বলতিস, এখন বলে কি লাভটা ছিল তোর? কি হয়েছিল? কোভিড? কোভিড? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, একটু পড়িয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। নির্মল কাকু মারা গেছে, নির্মল কাকু মারা গেছে। কিসে? হার্ট অ্যাটাকে। কখন? এই তো একটু আগে। বাবার কাছে যেতে বলছে, বাবা তো ক্লোজ ছিল ওর। হ্যাঁ সে তো জানি, খবরটা দিদি এখন পেয়েছে? দিদি একটু আসে কি? তুমি তুমি যেতে পারবে না তো, আমি যাচ্ছি, একটু পড়িয়ে যাচ্ছি আমি, ठीक है। हाँ, तो जो हुआ, तो हम लोग तो बहुत सारा एटम है, इसीलिए इट इज द 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हम लोग एक साथ मिली, ठीक है, बहुत सारा एटम। तो देख हम लोग, हाँ बोल सर। एक बार ये पूरा पार्ट एक बार शुरू से वापस पढ़ा देंगे सर? कौन सा, कहाँ से? यही वाला जो आप बोल रहे हैं, इतना लिए मोल्स मोल्स, एक बार स्टार्टिंग से बोल दीजिए ना, हम समझा। ठीक ना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। What we are doing is this, मैं কি হচ্ছে রে সংস্কৃতা তোদের? क्या हो रहा है देख, मेरा पास क्या था, मेरा पास एक डिस्चार्ज ट्यूब था ना, एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक डिस्चार्ज ट्यूब था क्या नहीं था बता? तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ली, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ला पाएंगे ना? तुझे तो बहुत सारा हाइड्रोजन पार्टिकल्स इसको अंदर में है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाँ कि ना बता? यस सर। तो मैं बोल रहे थे कि कितना मॉलिक्यूल्स हो सकेंगे। सपोज यू टेक जस्ट 1 मोल में मेरा कितना मॉलिक्यूल्स है बता? 6.023 into 10 to the power 23। इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, हाँ कि ना? इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, तो मेरा यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स में कितना सारा एटम्स है बता? 2। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, तो कितना सारा एटम्स मुझे निकला? अगर 1 मोल लेता है तो 2 into 6.023 into 10 to the power 23। इतना सारा एटम्स है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में इतना सारा एटम्स हो सकता है। 1 मोल तो छोटा चीज होता है, हाँ कि ना बता? अगर तू 2 ग्राम भी हाइड्रोजन लेता है वो तो 1 मोल होता है। 2 ग्राम मीन्स कितना है रे? 2 ग्राम यू कैन नॉट इवन फाइंड द वेट इन योर हैंड, इतना छोटा है। उसमें भी मेरा पास कितना एटम होगा? 2 into 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स होगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसको बाद देख, मैं अभी क्या कर रहा है, इसको हाई एनर्जी दे रहा है। तो हाई एनर्जी दे रहा है मींस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहले जो ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में अनएक्साइटेड स्टेट में था, एक ही इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर था, ठीक है। अभी कुछ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएंगे, कहां पर? यहां से मूव करेंगे मेरा सेकंड एनर्जी लेवल में, हाँ कि ना बता? यस सर। एक साइड कुछ मॉलिक्यूल में एक थर्ड एनर्जी लेवल में जाएंगे। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है ना, बहुत सारा एनर्जी दे रहा है तू। कुछ मॉलिक्यूल्स में फोर्थ एनर्जी लेवल में जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स में फिफ्थ लेवल में जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स में सिक्स्थ लेवल में जाएंगे, हाँ कि ना बता? यस सर। ठीक। तो हम लोग अभी जो देखा, जब भी ठीक है, ये सब एक्साइटेड होके चला गया, कुछ n = 2 में, कुछ n = 3 में, कुछ n = 4 में, कुछ n = 5 में, कुछ n = 6 में, ठीक है। द मोर क्लोज यू गो, जो जितना एनर्जी हम लोग का बढ़ेंगे उतना हम लोग क्या देखते हैं ना, आवर एनर्जी लेवल्स बिकम वेरी क्लोज। देख फिगर 2.11,
look at figure 2.11 in your book. Yes, sir. देख ऊपर वाला एनर्जी लेवल एकदम क्लोज पैक्ड है. देख एकदम क्लोज पैकिंग है. पहले से n is equal to 1 से n is equal to 2 देख बहुत ज्यादा फर्क है. Yes, बाकी sir. ना संस्थिता হ্যাঁ স্যার একটু 1 মিনিট, এটা কি প্রবলেম, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছে, 1 মিনিট দাঁড়ান। জলটা দাও. স্যার ঠিক আছে এবার। n is equal to 1 থেকে n is equal to 2 এর মধ্যে এনার্জি ডিফারেন্সটা দেখ. ফিগার 2.11 এ যা. দেখেছিস কতখানি ডিফারেন্স আছে? প্রচুর প্রচুর. হ্যাঁ কতখানি ডিফারেন্স আছে এনার্জির? কতখানি এনার্জি ডিফারেন্স আছে n is equal to 1 থেকে n is equal to 2 এর মধ্যে? जमीन आसमान। দেখেছিস সংস্কৃতা? কতখানি ডিফারেন্স আছে বল? বল। হ্যালো হ্যাঁ স্যার দাঁড়াও, তুমি একটুখানি বলবে কোন পিকচারটা কি বললে এখনো? ফিগার 2.11 n is equal to 1 থেকে n is equal to 2 এই যে এনার্জি ডিফারেন্সটা কতখানি? অল্প না অনেকটা বেশি? অনেকটা বেশি। n is equal to 2 থেকে n is equal to 3 এর মধ্যে ডিফারেন্স কত? 1 আর 2 এর মধ্যে দিয়ে কম কিন্তু বেশি। হ্যাঁ 1 আর 2 এর মধ্যে যেটুকু ডিফারেন্স আছে তার থেকে কম কিন্তু বেশি। কি বলছিস বল? হ্যালো হ্যাঁ বল। হ্যালো ডিসটেন্স তো তোমাকে। হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বল। বলছি n = 2 থেকে কি বললে n = 3 তে কতটা ডিসটেন্স আছে? হ্যাঁ কতখানি ডিসটেন্স না এনার্জি ডিফারেন্সটা কত? ডিসটেন্সের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, এনার্জি ডিফারেন্সের কথা। এনার্জি ডিফারেন্সটা বেশি আছে অবভিয়াসলি। বেশি আছে নাকি? n is equal to 1 থেকে n is equal to 2 এর মধ্যে যতখানি এনার্জি ডিফারেন্স যতটা তার থেকে কম আছে। অনেক কম? হ্যাঁ অনেক কম, কিন্তু তার থেকে কম কিন্তু। আর n is equal to 3 থেকে n is equal to 4 এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কত? একদম কম? একদম কম। যত উপরে যাচ্ছিস তত এনার্জি লেভেলস গুলো কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে? কম হচ্ছে। হ্যাঁ ভেরি ইয়েস দিস ইজ ওকে। यस सर। ফাইন ফাইন। তো আমার কাছে এখন আমি কি দেখছি যে আমার এই ইলেকট্রনস গুলো দিস ইলেকট্রনস ক্যান মুভ এট ডিফারেন্ট এনার্জি লেভেলস, রাইট? নাও if an electron moves from n is equal to 2 to n is equal to 1, or it moves from n is equal to 3 to n is equal to 1, or it moves from n is equal to 4 to n is equal to 1, or it moves from n is equal to 5 to n is equal to 1, or it moves from n is equal to 6 to n is equal to 1. तो ये जो wavelength, these are all their emitting energies. ये जो wavelength energy emit कर रहा है, they all belong to the ultraviolet region. They all emit in the ultraviolet region. All these wavelengths fall in the ultraviolet region. That means what? The electrons are moving from n is equal to 2 or 3 or 4 or 5 or 6 ... to n is equal to 1. Is that clear to all of you? Is that clear to all of you? यस सर। ये in the ultraviolet, these are called ultraviolet regions. These are all in the ultraviolet regions, right? Now
Now, ये जो वेवलेंथ निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। আমি দুপুরে করেছিলাম তোর বোনকে ফোনে পাচ্ছিলাম না, এখন পড়াচ্ছি বলে কেটে দিলাম, পরে করছি আবার তোকে। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। So what does Lyman series actually means? That whenever an excited electrons from n is equal to 2 or 3 or 4 or 5 or 6 comes to n is equal to 1, इसको हम लोग बोलते हैं Lyman series. Is it clear? Lyman series किस रेंज में आप लोग वेवलेंथ एमिट करता है? All of them emit in the ultraviolet region. Musadi, is that clear? Yes, sir. If the electrons move from n is equal to 6, 5, 4, 3, 2, n is equal to 2, that means they are all now jumping from where? They are now all jumping from say n is equal to 6 say n is equal to 2, or n5 say n is equal to 2, or n4 say n is equal to 2, but n3 say n is equal to 2. जब ये सब जंप करता है, their wavelengths fall into the visible region, and you call this series as Balmer series. Balmer series. समझ में आ गया? Yes, sir. Similarly, if the electron moves from n is equal to 4 to n is equal to 3, n5 से n3 और n6 से n3, तो इसको हम लोग बोलते हैं they all are now in the IR region, infrared region, and you call them as the Paschen series, and likewise. So there are 4 series. Look at table 2.3. Now I guess everything will be clear to you. Look at table 2.3. Yes, sir. Clear? Ekdam clear? Yes, sir. Right. Fine. Now, what happened is this. They analyzed this particular lines. They analyzed what? They analyzed the Lyman series. They analyzed the Balmer series. They analyzed the Paschen series. You have to remember this thing. They analyzed the bracket series, and they analyzed the Pun series. They analyzed all these series and found out that the wave number means what? E is equal to hc by lambda is equal to hc 1 by lambda is equal to h Wave number. nu bar. That means nu bar is nothing but E by hc. Wave number. Yes. So instead of expressing in terms of energy, you can also express in terms of wave number, which is usually the custom as far as spectrum is concerned. For spectroscopy, usually you do it in the terms of wave number. So when they tried to find out the relationship of wave numbers between all these series, they have found out what? That you have got a constant 109677 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. They have found out this relationship, right? Where for Lyman series, this n1 is 1. For Balmer series, and n2 is 2, 3, 4. For Balmer series, this is 2 and n1. For this, it will be 3, 4, 5. For Paschen series, this is 3 and it will be 4, 5, 6, likewise. समझ में आ गया?
Yes, sir. This is the relationship. They have found it empirically. तब भी हम लोग का एटम का स्ट्रक्चर को बारे में कुछ पता नहीं था. Why this constant is coming, we never know. Why this particular relationship or a pattern is emerging, we never know. ये तो pattern है ना. This entire thing is nothing but a pattern. हाँ कि ना बता. Yes, This sir. entire is a pattern. एक pattern है बोल के basically you could basically represent it with a formula. ये तो formula बन गया ना. तो एक pattern है बोल के एक formula है. For example, circle. पकड़ ले एक सर्कल है मेरा पास. सर्कल को एरिया कितना होता है? Pi r square. What is the area of a pi r square? Suppose this is a circle. ये pi r square बोलता है. Why you can basically write that formula? Because circle has a pattern, a fixed pattern. Whenever there is a pattern, there is a formula. Yes, Okay, sir. na? So just because there is a formula which essentially could explain all these different diverse series, certainly says that in the underneath there is a definite structure of that. And our job will be to discover that particular atom tomorrow, the structure of this atom. Tomorrow from Bohr's model, we are going to deduce this relationship. तब तक जब ये तब किया था ना, तब तक ये लोगों को पता नहीं था बोर्स मॉडल क्या होता है, क्वांटाइजेशन एनर्जी क्या है, कुछ पता नहीं था. They have just found out this relationship. बोर्स मॉडल क्या किया? बोर्स मॉडल was the first attempt. उस मॉडल में भी गलती है, but it was the first model where they showed that this pattern is valid. समझ में आ गया? Yes, sir. Absolutely crystal clear? Yes, sir. अरे ये संस्थिता crystal clear ना crystal confusion? Crystal confusion like clear. Is crystal confusion? Na. কি Na. একদম প্রশ্ন হয়েছে তো দেখ সংস্থাটা হ্যাঁ দৃশ্য একদম পুরো ক্লিয়ার Yes, sir. now if you don't study by tomorrow you'll forget everything ये बार बार मैं आप लोग का बोल रहा हूं if you don't study whatever your teachers are teaching you either in school or whatever private tuitions you're having 10 टीचर रख के कोई फायदा नहीं होता है until unless you know how to study. खुद का पढ़ाई खुद का ही करना पड़ता है. टीचर्स आर ओनली देयर टू हेल्प यू. मैं जो आज एक्सप्लेन किया, could you not understand yourself by researching on it? Yes, you could. But then you would have taken 1 month. The teacher's job is to explain you that 1 month for hard work, 1 घंटा. That is the only job of a teacher. पढ़ाई आपका खुद का. Always, wherever. You have to understand this. Okay, सर तो पढ़ाया दिया. I have understood everything. ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे बोले जाके सो जा रहे हो. संस्थिता और दृश्य उसमें कोई फायदा नहीं होता. You are wasting your time. You are wasting my time. You are wasting your father's time. और कुछ होता नहीं. I'm telling you a very honest opinion just because you are like my kids. जो मेरा बच्ची को बोलता है वही आप लोग का बोल रहे हैं. Any questions, Drisha? No, sir. Shansita, any questions? Achha, Shansita, you're supposed to send me questions, right? वो हो गया 3 दिन, अभी तक नहीं भेजा आपने. अब भेजिए, मैं तो धीरे धीरे करना पड़ेगा ना. Whenever I'll find some off time, मैं करके एक फोटोग्राफ लेके आप लोग का भेजेंगे, आपको भेजेंगे. ठीक है, आप व्हाट्सएप में फोटो करके मुझे भेज दीजिएगा. तो टाइम भी नहीं जाता है, लिखने को टाइम तो बर्बाद नहीं होता है. एक ही तो खाली हाथ ऐसी करके उठा. व्हाट यू नीड टू डू, ये है मेरा मोबाइल, ये मोबाइल लो, ऐसी करके कैमरा ऑन करो, एक फोटो खींचो, व्हाट्सएप में भेज दो, सो जाओ. सर है ना, सर कर देंगे. वो भी वक्त आप लोग का मिलता नहीं, यही तो मुश्किल है. Okay.
Okay, so tomorrow at what time we are meeting, Sanskita? 7 o'clock. Drisha? Sir, 7. 7. Avi, बैठ के पढ़ लो Drisha. You'll understand sir. everything. So that you can Sir. also ask if there's any. हाँ बोल बेटा. सर सुबह जो क्लास का स्क्रीन का फोटो सब है सर वो भेज दीजिए ना प्लीज। वो तो एकदम फालतू है, स्टोर भी नहीं किया, वो तो एकदम फालतू किया था तुमने। है क्या और देखते सर हैं नहीं? आपका लिंक जो आप मेरे को भेजते हैं ना सर वो पहले खुलता ही नहीं है सर। दूसरी बार खुलता है? दूसरी बार भी नहीं खुलता, बहुत मतलब उस दिन भी भेजे तो पहले 1 घंटा तक नहीं खुला, उसके बाद आया, और आज जो भेजे वो तो अभी तक नहीं आया सर। আরে তোদেরকে যে ভিডিওগুলো পাঠায় সংস্থা খোলে না তোদের মোবাইলে? सर मेरा में मतलब लिंक आने से तो ब्लू हो जाता है ना, डायरेक्ट दबाने से खुलता है, मेरा व्हाइट ही रहता है, दबाने से कुछ नहीं होता है सर। तेरा वो कैसे हो सकता है बेटा? सभी को तो एक ही चीज भेजता है। देख आज भेजते हैं तो देख क्या होता है, नहीं होता तो क्या करना है मुझे बता। बोल क्या करना है मुझे। ऋषभ, यस सर। मुझे क्या करना है बता। सर मैं एक बार ट्राई करके देख लूंगा, आज सर आया तो फिर ठीक है। अभी देखना, तेरा है तो सामने में देख ले। सुबह तो भेजा था एक। हाँ सर सुबह वाला ही। नहीं खुला? नहीं सर। लेकिन आई हैव गॉट अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स, ये तो कोई बोला नहीं, आप ही पहले बार बोल रहे हो। आपको नेटवर्क ठीक है होता है ना? नेटवर्क तो ठीक है, आप तो अच्छे से बात कर रहे हो, एक बार भी तो डिस्टर्ब नहीं हुआ। आप तो मेरा से पिछली ना चौथा क्लास है मेरा, आपको सब मेरा एक बार भी तो डिस्टर्ब भी तो नहीं किया। यस नेट सर। तो ठीक ही आता, नेट तो ठीक ही आता है आपको, फिर क्या हो गया? सर देखता है तो एक बार देख, नहीं तो देखता है दूसरी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? लिंक भेजने से नहीं होता है क्या? सर मेरा मतलब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ सर, आपने जो लास्ट दिन जो मुझे भेजा था उसका मैं आपको भेज रहा हूँ, और अब आज वाला भेज रहा हूँ। तुझे मुझे बोला जो ठीक है आ रहा है, तू तो मुझे उसके बाद ही बोला हाँ सर मेरा आ रहा है बोला तो तू। हाँ सर उस दिन वाला आ रहा है सर, आज वाला नहीं आ रहा है, आपको भेज रहा हूँ मैं सर, देखिए। ठीक है बेटा। मुसादे, यस सर। तू भेज के देख, बाद में तेरे साथ बात कर लेते हैं, अभी घर में थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया, जाना पड़ेगा अभी दूसरी जगह। ठीक है सर। ठीक, गुड नाइट। गुड नाइट सर। कल 7 o'clock। यस सर। गुड नाइट संस्थिता। सर रात शाम को ना? संस्थिता हाँ हाँ या tomorrow 7 evening, यस सर। 7 in the evening। यस सर। चल बाय बाय बाय।